अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूरोप के अंदर जितने हम मुसलमान बसते हैं उनको कभी ना कभी ऐसे हालात से सामना करना पड़ता है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी या कुरान मजीद की बेहुरमती। तो उसका जो बेहतरीन सबसे आला जो जवाब है या जो उसका बदला है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ जो है उसका विरद करें ताकि इन लोगों के सीनों में ठंडक पड़े और वो अपनी इन हरकत से बाज आएँ। आज 28 जुलाई 2023 और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। अगर आप आसमान पे देखें, बादल छाए हुए, कोई गर्मी नहीं है। जलसा सालाना यूके का आज पहला दिन, जुम्मे का दिन, जुम्मे के बाबरकत दिन से आगाज़ हो रहा है। इस वक्त हम जो जलसा गाह है या इस्लामाबाद, उससे थोड़े फासले पे जो अपने अजीज़ों के पास रुके तो वहाँ से निकलते हुए आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं। आम तौर पे आपको याद होगा कि रब्वा में जब जलसे हुआ करते थे, पूरे पाकिस्तान से जो लोग आते थे, वहाँ घरों के अंदर कभी एक फैमिली, दो फैमिली की जो गुंजाइश होती थी वहाँ कमरे पेश किए जाते थे। और वो जो जलसे का माहौल था उसको जिन लोगों ने एंजॉय किया हुआ है वो इस माहौल को देख के दोबारा उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कभी घरों के अंदर कैपेसिटी से ज़्यादा मेहमान ठहरने, सुबह वही रब्वा वाली भाग दौड़ तैयारी करें, पहुँचें। और फिर रब्वा में तो सर्विस का वो दूर का मसला नहीं होता था यहाँ, लेकिन यह है कि सवारी के लिए तो आज हमें ये सहूलत मिल गई है कि जो हमारे मेज़बान यहाँ उनकी ड्यूटी लगी हुई है मेहमानों को ले जाने की, तो उनके साथ वक्त पे हम भी निकल गए। ये मंज़र जो आप देख रहे हैं रास्ते का, ये पूरे यूके में बल्कि पूरे यूरोप में आप कहीं भी चले जाएं तो इस तरह का सब्ज़ा, खूबसूरत सड़कें, सफाई, ट्रैफिक की जो पासदारी है कवानीन की, ये आपको सही नज़र आएगी। आप जानते हैं कि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। कई लोग सरे महल की वजह से मशहूर होते हैं, कई लोग जो हैं वो पाकिस्तान में माल लूट के बाहर लाने में मशहूर हैं, फ्लैट्स बना लिए। लेकिन एक पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसी भी है जिन्होंने दुनिया में अपनी शोहरत पैदा की, लेकिन किस चीज़ से? वो खुदा के दीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो झंडा है उसकी बुलंदी के साथ। ये जलसे हर साल होते हैं दुनिया भर में जहाँ जहाँ अहमदी बसते हैं, लेकिन यूके का जलसा एक ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ प्यारे आका खलीफतुल मसीह की रहाइश है। इस वजह से ये मरकज़ी जलसा हो जाता है। और इस पे जो सबसे बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि इस जलसे पे जो लोग आते हैं, यहाँ जलसा क्योंकि बाहर होता है, एक जो जगह खुली जगह ली हुई है, तो बारिश से वहाँ बाज़ औक़ात कीचड़ भी हो जाता है और ट्रैफिक जैम भी होती है। लेकिन वो लोग जो आम हालात में कभी छोटी छोटी चीज़ों पे भी बर्दाश्त नहीं करते, वो जब यहाँ जलसे पे आते हैं तो वो इस माहौल को अल्लाह ताला की जो एहसानात, फ़ज़ल, उनको समोने एक्सेप्ट करते हुए वो इस पे खुश होकर जाते हैं कि जो भी है हम इस जलसे की बरक़ात समेट के जाएंगे। भी आपको वहाँ पहुँच के मंज़र दिखाएंगे। वहाँ बरसात की वजह से सुनने में आया है कि काफ़ी कीचड़ वगैरह भी है, लेकिन जो लोग हैं उनका जो रवैया या उनका जो होगा वो भी आपको इंशाल्लाह सुनवाएंगे। जलसा गाह पहुँचने से पहले ये देखें, रास्ते में ये जो छोटे छोटे गांव हैं, पुराने पता नहीं कितने कितने 100 साल पुराने ये घर बने हुए हैं, लेकिन ये है कि मजबूत हैं क्योंकि ये ईमानदारी के साथ बनाए गए हैं। मटीरियल इन पे सही लगाया गया है और जो ठेकेदार उस वक्त भी होंगे उन्होंने भी इसमें किसी किस्म की वो पाकिस्तान में जिस तरह होता है कि जो मर्ज़ी मिला के बना दो, वो नहीं किया होगा। नहीं जी, ये हमारा जो सफ़र है जलसा गाह की तरफ वो जारी है। तो हमारे साथ जो दोस्त हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी लगाई हुई है मेहमान आने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होटल से लेना
और लेके वो जलसा गाह पहुँचाना। तो पहला होटल जो है यहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से भी चंद मेहमान साथ हमारे शामिल होंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये जो खिदमत दीन है या जलसा के मेहमानों को पहुँचाना, लेके आना, इसके अंदर खुदा ताला ने लोगों के लिए जो सवाब का ज़रिया खोला हुआ है, इससे सब जो हैं वो इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं जो अपने कामों से छुट्टी ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने ज़ाती कारोबारों से छुट्टी ले लेते हैं और इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि हज़रत मसीह मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मेहमान जलसे पे तशरीफ़ ला रहे हैं उनको उठाएं और फिर शाम को जब ख़त्म हो तो वापस होटल में पहुंचाएं। ये जो मज़ा है ये वही बता सकते हैं जो इस खिदमत से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। लें जी, आज हमें ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जो पहले दोस्त जो मेहमान अभी हमने साथ लिए हैं ये अमेरिका से हैं। वहाँ ये प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी में और दूसरा इनका चक्कर है यहाँ जलसे पे। 10 साल पहले ये आए थे और जो सबसे बड़ी अहम बात वो ये कि पैदाइशी अहमदी नहीं बल्कि उन्होंने अहमदियत को जवानी के आलम में एक्सेप्ट किया। तो इनसे हम अभी इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे और फिर इनका जो जवाब है, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे दोस्तों के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कैसे अहमदियत को कबूल किया और उनकी ज़िंदगी में कैसे एक तब्दीली आई अहमदी होने के बाद। तो इनसे पूछते हैं और फिर इनसे जवाब। सो माय ब्रदर, यू कैन टेल मी इन शॉर्ट वर्ड्स हाउ यू एक्सेप्टेड अहमदियत एंड व्हाट हैज़ चेंज्ड in your life, this decision, what difference it make in your, so you can first introduce you a bit. Assalamualaikum. My name is Basir Rodney. I am from St. Louis, Missouri. I was originally born in Jamaica, so I accepted Ahmadiyyat there. A group of preachers, if you will. They're not Murabbis, they're not missionaries, but they had come to Jamaica in the mid-90s, in about 95, to preach Ahmadiyyat, and I met them. I had seen an ad in a newspaper and I had just written away looking for Islamic literature, and they responded, and then they came to the island and met me. I spent a day with them asking questions about different things, and by Allah's grace, you know, the truth was open to me. I think my heart was just open for it at that time, and I accepted Ahmadiyyat. I was just in the questioning phase. I was about 18 years old. I think my life has changed in many ways. You know, if nothing else, I've said that Ahmadiyyat has provided just a level of stability for me in terms of my thinking, right? When you're on truth, then there's nothing else to really think about. You're not confused about what's happening in the world. When you see things in the world, then you can easily understand it because you have the truth on your side and you know why human beings are behaving the way they're behaving. So that helps me just for rationality purposes. Alhamdulillah, by Allah's grace, I got married also to a lady that's an Ahmadi, and we have a family, and that's just provided just a clear focus for me in terms of life, right? I didn't come from a culture where people got married young and stayed married long. So it's a blessing to be able to do that, right? To be of those who was able to establish family and have this kind of great life experience because of the truth of Ahmadiyyat. So of course Ahmadiyyat also gives us the system of Khilafat, and again, when things happen in the world, we're not confused. We can reach out to our leader, we can ask questions, we can get guidance, and many people in the world today are hungry for guidance. So it's a blessing to be able to have that in my life at least. So alhamdulillah, you know, that's my story truncated. Yeah, that's thank you very much. I will like to ask you, how many Khalifas you have got this opportunity to meet and take guidance in your life? Well, alhamdulillah, I came to Ahmadiyyat in the time of the fourth Khalifa, Hazrat Mirza Tahir Ahmadi. In fact, I have personal correspondence from him for various things in my life, because as I said, when I became an Ahmadi, I was at that age where you're looking and searching and looking for meaning. So I wrote to Khalifa Masih for various things, and I still cherish those letters. He responded to me directly, you know, about my health, when I asked about health questions, about spirit. Sometimes there was a little bit of challenge from some Sunnis in Jamaica when I was coming up, and I remember reaching out to him on that, and he was able to just give me support and guidance. Nowadays, those people are not even in play, you know. That's the supers of Khilafat. And of course, I've also met
Khalifa Masih al-Khamis, the fifth Khalifa, you know, I had a dream that he was planting a tree in Jamaica. Yes. Early in his Khilafat. And literally he was beside my old home and he was planting a tree. Okay. And that was even before the masjid, Masjid al-Mahdi was built in Jamaica. So alhamdulillah, you know, I've had the benefit of being under this kind of guidance and, you know, just seeing the truth also of Khilafat. Yes, right? yes. Because you're seeing these miracles happen in your life and in the world every day. So those two Khalifa have shaped my life. The second Khalifa, alhamdulillah, though he was certainly not living, when I accepted Ahmadiyyat, I read his books and they provided a certain degree of sharpness for me and clarity in my thinking. And although many of them, of course, were translated, but in the way he put things, the way he organized information, that was very instrumental, even to my own development as an academic. So I appreciate that guidance from the beyond, if you will. Yes. And alhamdulillah, Khalifa Masih al-Thalith, the third Khalifa, I also serve as the president of the Pan-African Ahmadiyya Muslim Association in the USA. And so I know the third Khalifa had a special love for Africa. And so I was drawn to many of his books and speeches around Africa when I joined Jamaat, because I was looking, again, I was in Jamaica, so I was looking for that kind of information. And so that's provided some rich guidance for me as well, to think of myself as a, you know, in my own culture, my own racial space, but at the same time, to see myself as an Ahmadiyya, a person of spirit, and a person in this Nizam. So I've received all of these guidances from the spiritual well, if you will, the fountain of the Holy Prophet Muhammad and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Thank you very much for giving us some time. Inshallah, we will see again and again on Jalsa days. Assalamu alaikum.